Hello student, today we will learn about polynomials for class 10 from NCERT. About polynomials we know in class 9. So we start in this class about polynomials. What is polynomials? Polynomials are those which has more than two terms are called polynomials. We can divide into many terms. So we can see if px is a polynomial in x to the power of the highest power of x in px is called degree of polynomial in px. For example, 2x minus 1, this is a polynomial and power of polynomial 2x minus 1 is 1. This is degree. The maximum power of the highest power of, if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of polynomial in px. Here 2x minus 1 is a polynomial and the maximum means the highest power of x is 1. So the degree of polynomials in px is 1. Clear? Now we can divide polynomials in following parts. First, linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल 2x minus 1, 5 plus 3x, 7x and so on. ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जिस पे कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें x की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं. और इस लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1. डिग्री कितनी होती है? 1 होती है. linear polynomials. And second, quadratic polynomials. Quadratic polynomials ऐसे polynomials जिनमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, x square plus 5, 3x square minus root 2, 2x square plus 3x plus 7, x square plus 5, 3x square minus 2. So this is a
quadratic polynomials because the maximum power of x is 2. The maximum power of x is 2. So we can say this and this are quadratic polynomials. The degree of quadratic polynomials is 2. Degree of quadratic polynomials is 2. Okay, student? Now, cubic polynomial. Cubic polynomials. Cubic polynomials are those which has maximum power of x is 3, that is cubic polynomials. For example, x cube plus 4x square minus 3x plus 2, x cube plus 5, 7 by 5, x cube minus 7. This and this is cubic polynomial because the maximum power of x is 3. 3, 3 and 3. Maximum power of x is 3. So this is cubic polynomial and the degree of cubic polynomial is 3. Degree of cubic polynomial is 3. Clear, student? Next, zero polynomial. Zero polynomials are those which has the maximum power of x is 0. This means we can say any constant value is zero polynomial. For example, 3. This is zero polynomials because here the maximum power of x is 0. यहाँ पे x नहीं है बट हम यहाँ पे x को 0 राइट कर सकते हैं. दिस इज जीरो पॉलिनोमियल मीन्स कोई भी डिजिट या कांस्टेंट वैल्यू जो भी होती है वो क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल्स होती है. इनके साथ हम x को 0 राइट कर सकते हैं बिकॉज x को 0 इज इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट, सो we will learn exercise first from polynomials. Exercise 2.1. Question number 1. Find number of zeros in following graphs. This is x-axis and this is y-axis. यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो कर्व लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. सो इसके जो जीरो आएंगे वो 0 आएंगे. सो वी कैन से द नंबर ऑफ जीरोस is 0 as graph does not cut x-axis at any point. अगर x-axis को
ये कर्व लाइन किसी भी जगह पे जितनी बार वो कट करेगा उतने ही उसके जीरो जाते हैं। बट यहाँ पे इस ग्राफ में ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता, सो वी कैन से द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो as a graph does not cut x axis at any point. Next, this is x axis and this is y axis. Here, this curved line intersect x-axis at this point, this point, this point, and this point. So the number of zeros is 1, 2, 3, and 4. The number of zeros is 4 as a graph intersects at a 4 point, intersect x-axis at 4 point. Clear, student? Next, this is x-axis and this is y-axis. Here, this curve intersect at a x-axis at this point and this point. x-axis को दो पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करता है, so we can say the number of zeros is 2 as a graph intersects x-axis at 2 point. क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? ये जो कर्व लाइन होती है ये एक्स एक्सिस को जितनी भी जगह पे कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं। This is x axis and this is y axis. यहाँ पे x एक्सिस को ये कर्व लाइन को एक जगह पे कट कर रही है, सो वी कैन से द नंबर ऑफ zeros is 1 as a graph intersects x-axis at 1 point. Okay student, according to this आप लोग एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।